Asalam-o-Alikum. In international economics class, our today topic is Leontief Paradox. So, according to the popular Haberler model of international trade, a country is expected to import those products whose production require the intensive use of the factor of production in relative abundance scarcity. हेक्सर ओलिन के मॉडल को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में भी, जिसमें हमने ये समझा था कि अगर दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं तो एक कंट्री जिसको ज़्यादा एफिशिएंट है प्रोडक्शन में, जिस भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में एफिशिएंट है, वो उस चीज़ को प्रोड्यूस करके दूसरी कंट्री को बेचता है, और दूसरी कंट्री जो है वो जिस चीज़ में एफिशिएंट है वो फर्स्ट कंट्री को बेचता है। यही हमने डिस्कस किया था। बट लेंटिफ पैराडॉक्स जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है हेक्सर ओलिन के मॉडल को। हेक्सर ओलिन के मॉडल को क्रिटिसाइज करने के लिए उसने क्या किया था, लेंटिफ ने दो अटेम्प्ट किए थे, एक 1953 में और एक 1956 में। सो हाँ, उस दोनों के रिजल्ट जो है वो टोटली सेम थे और अपोजिट थे हेक्सर ओलिन के मॉडल के। So, the first serious attempt to test the theory was made by Professor Leontief in 1953. Leontief tested empirically the Hexer-Ohlin model for the US economy, an unquestionably capital-abundant country. The results suggest that the US export labor-intensive products and import capital-intensive ones. यानी कि जो कंट्री एक कैपिटल अबंडेंट कंट्री है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट कर रही है और एक्सपोर्ट कर रही है लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को। सो दिस रिजल्ट हैज कम टू बी नोन एज लेंटिफ पैराडॉक्स। पैरा मीन्स कंट्रेरी टू एंड डॉक्स मीन्स ओपिनियन। सो जो हेक्सर ओलिन का मॉडल है वो क्या कहता था कि जो कंट्री जो चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, अगर वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है तो वो कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी। दूसरी कंट्री अगर लेबर अबंडेंट है तो वो लेबर के गुड्स को दूसरी कंट्री को बेचेगी। लेकिन लेंटिफ पैराडॉक्स का कहना है कि यूएसए जो है वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, बट यूएस जो है वो क्या कर रहा है, किस चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को, और इंपोर्ट कर रहा है कैपिटल इंटेंसिव वंस को। सो ये कैसे पॉसिबल है? यानी कि जिस कंट्री में जो चीज सबसे ज्यादा है वो उस चीज को एक्सपोर्ट ही नहीं कर रही। तो इसके लिए क्या किया था लेंटिफ पैराडॉक्स ने, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। अब ये फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल क्या है? जैसे हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था, हेक्सर ओलिन के मॉडल के अजम्पशन जब हम रीड कर रहे थे उस टाइम पर हमने एक अजम्पशन जो है वो रीड किया था, जिसमें हेक्सर ओलिन का मॉडल जो है उसका कहना था कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए वो दोनों कंट्रीज में सेम होनी चाहिए, जबकि लेंटिफ पैराडॉक्स या फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल जो है वो उस अजम्पशन के टोटली अपोजिट है। उस टाइम भी हमने फैक्टर लेंटिफ पैराडॉक्स का जिक्र किया था। सो फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल मीन्स एग्रीकल्चर इज लेबर इंटेंसिव इन पाकिस्तान बट कैपिटल इंटेंसिव इन यूएस। इसका मतलब हुआ कि जो एग्रीकल्चर है वो पाकिस्तान में लेबर इंटेंसिव है, जबकि यूएसए में वो कैपिटल इंटेंसिव है। तो इसका ये मतलब हुआ कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो दोनों कंट्रीज में सेम नहीं है। प्रोडक्शन फंक्शन आर डिफरेंट फॉर द सेम कमोडिटी।
So a factor intensity reversal means that a good is relatively capital intensive compared with other good within a country or region, but relatively labor intensive within another country or region. However, in two or more factor general equilibrium models such as the Hexer-Olin model, it is common to assume no फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल हेक्सर ने क्या कहा था कि फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल नहीं है जबकि लोएंटेफ जो है वो कहता है कि फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल है तभी तो प्रोडक्शन जो है वो दोनों कंट्रीज में पॉसिबल है दिस assumption is so important that it's break down the result in the collapse of several well-known theorems such as the Hexer-Olin theorem and the Stolper-Samuelson theorem, such as a collapse in turn, makes it difficult, for example, to predict either trade pattern or the effect of trade on inequality. So, if a commodity is produced by a labor-intensive process in the labor-rich country, also by a capital-intensive process in the capital-rich country, then factor intensities are reversed in the production of that commodity. एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं एग्रीकल्चर इज लेबर इंटेंसिव इन पाकिस्तान बट कैपिटल इंटेंसिव इन द यूएस if US import agriculture product then Leontief paradox occur in the US because US import them because capital abundant country is importing the capital intensive product. If US export agriculture product, then learned of paradox occur in Pakistan because a capital abundant country, Pakistan is importing the labor intensive good. So Haberler's opportunity cost theory, as we already discussed, the Ricardian theory, तो ये उसके extension है. Haberler has attempted to restate the comparative cost in terms of opportunity cost. He demonstrated that the doctrine of comparative cost can hold valid even if the labor theory of value is discarded. So Haberler used the opportunity cost curve to express one commodity in terms of others. The opportunity cost is what has been given up in order to have some quantity of another thing. If an additional unit of one commodity has to be produced, the productive resources are to be diverted from the production of some other commodity to the given commodity. So the resultant decrease in the quantity of the second commodity represents the opportunity cost of the additional quantity of the given commodity. So example के through देख लेते हैं. Let's suppose there are two country A and B, two commodities A and B, and एक person है और वो क्या करता है A commodities को ज़्यादा से ज़्यादा ले रहा है. Let's suppose 5 units ले रहा है तो उसको वो क्या करेगा 5 यूनिट B के सेक्रीफाइस करेगा. इसके 5 यूनिट को इंक्रीज करने के लिए यहाँ से 5 यूनिट जो है वो डिक्रीज होंगे. दिस इज व्हाट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज. अगर वो 6 यूनिट ले रहा है ए के तो 6 यूनिट को इंक्रीज करने के लिए बी के वो 6 यूनिट को इग्नोर करेगा. दिस इज व्हाट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द एडिशनल यूनिट ऑफ ए commodity. Now we will discuss the uh, types of opportunity cost. Number one is the constant opportunity cost. The second one is the increasing opportunity cost. The third one is the decreasing opportunity cost. So the first one is a constant opportunity cost, where on y-axis we have commodity y and on x-axis we have commodity x. So if a person want to sacrifice 1 unit of A, he will gain 1 unit of commodity X. If a person want to sacrifice 2 unit of commodity Y, he will gain 2 unit of commodity X. This is what the constant opportunity cost is. So
In figure, commodity X is measured along the horizontal axis and commodity Y is measured on the vertical axis. AB is the opportunity cost curve at every point on the straight line or opportunity cost curve AB marginal rate of transformation remain equal. That is a long curve. The marginal cost of producing commodity X and commodity Y remain unchanged, and production of both the commodities is governed by constant return to scale or constant opportunity cost. In this, all factors are equally efficient in all line of प्रोडक्शन. लेट्स सपोज आपके पास 100 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट को आप कंज्यूम करना चाहते हैं, तो आप 100 यूनिट को कैसे कंज्यूम करेंगे? 50 एक कमोडिटी का, 50 दूसरी कमोडिटी का, तो आपके पास आ जाएगा 100. टोटल आपने 100 कंप्लीट करने हैं. अगर आप सेक्रीफाइस करना चाहते हैं ए के एक और यूनिट को, तो बी का आप एक यूनिट गेन करके टोटल आपके पास जो है वो अगेन 100 आएगा. दिस इज द different combination of the commodities. Now the second one is increasing opportunity cost, where the curve is concave. It represents the case of increasing cost condition. In figure AB is concave to the origin. It means that the production of each extra unit of commodity X, a larger unit amount of commodity Y is to be foregone. Decreasing opportunity cost curve, where on y-axis we have commodity Y and on x-axis we have commodity X. So it means that the production of each extra unit of commodity X, a smaller unit or amount of the commodity Y is to be foregone. This convexity of the opportunity curve imply a negative slope indicating a decreasing marginal rate of technical substitution of X and Y. So this is the decreasing opportunity cost curve. The next one is international trade does not take place when slope of the opportunity cost curve are same. This is the opportunity cost of A, B, and the next one is A1, B1, which are parallel to each other. So from figure it can be seen that as the cost ratio of A and B are equal, therefore no international trade between the countries take place. The gain from the international trade can emerge only when the slope of the opportunity cost curve are different. This has been explained with the help of the next figure. So आज हम डिस्कस करेंगे हैबलर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कुछ अजम्पशंस को, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड की जितनी थेरीज हमने आज तक डिस्कस की है, सबके अजम्पशन जो है वो टोटली सेम है. So the first one is the economic system is in a state of full employment equilibrium. The second one is the perfect competition of in commodity and factor market. The third one is price of each commodity equal the marginal cost curve of producing it. The fourth one is price of each factor equal its marginal productivity. The supply of factor is fixed. The state of technology is given. There are two trading countries A and B. Each country produces two commodities, says X and Y. Each country has two productive factors, labor and capital. There is perfect factor mobility within each country, and the factors of production are perfectly immobile between the
two countries. Neither of the two countries imposes any restriction upon international trade. So, on the basis of the above assumption, it is possible to determine the opportunity cost curve or the opportunity possibility curve of any country.